को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहद खास मेहमान, एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम सब उनको जानते हैं, हमने उनके ट्वीट्स पढ़े होंगे, उनके ट्वीट्स बहुत वायरल होते हैं, उनकी बहुत बड़ी फैन बेस है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत फॉलोअर्स हैं और ही स्पीक्स लॉट ऑफ सेंस। A lot of people connect and resonate with what he speaks. A person, an officer and a gentleman, a hardcore infantarian who switched over to the JAG branch. JAG is the Judge Advocate General, who dispense justice to the armed forces personnel, to the army especially. And let me tell you, a khasiyat. Col Amit Kumar and ma'am, his wife, they are the first colonel couple of the world. Yes, the first colonel couple of the world. They have served together as colonels, wearing the same rank, same uniform, at the same time. Well, sir is now out of the army. He's on stand. He's busy with his thesis and whole lot of activities. Let's go on, move on further and और गुफ्तगू करते हैं। और आपको ये बात बताऊं, अभी आपने हाल ही में एक बहुत ही खबर में सुर्खियों में आई थी, अजय देवगन की फौजी वर्दी कंट्रोवर्सी, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। जी हाँ, वो शख्सियत है जिन्होंने आवाज उठाई कि भाई बॉलीवुड में ये सर्कस, ये नाटक चल क्या रहा है। बिना रिसर्च करे आप फौजी वर्दी किसी को भी पहना दो, जोकर है, कोई कॉस्ट्यूम थोड़ी है। अरे कोई कॉस्ट्यूम थोड़ी है फौजी वर्दी, ये तो हमारी यूनिफॉर्म है। सर, you'll be very happy to know, मेरे इमीडिएट अकेडमी के सीनियर हैं सर कर्नल संदीप सांगवान, मेजर संदीप सांगवान। He was hired as a professional defense consultant for PIPA, this film in which Ishan Khattar is acting as an armored co-officer. So now times are changing, but we will discuss about your Ajay Devgan controversy on that as well. And you have shown guts, you have shown courage, and you have spoken up on behalf of the organization. We are so proud of you, sir. Sir, thank you and welcome, and for spending time for us, sir. Jai Hind, sir. You're on mute, sir. Jai Hind, Ali, and Jai Hind to everyone who is watching the show. And Ali, what you have introduced me, इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है भाई, उतना लायक नहीं हूं मैं. I am also a common citizen like everyone in this country. And best thing was when you just gave me half an hour time to it was just like a PT what parade we say call it yeah within that this thing Amit. तो मैं खैर चलो मैंने स्टार्ट किया. मैंने कहा आज अली आरटी का बम्बार्डमेंट करेगा प्रिपेटरी, और हम इन्फेंट्री ऑफिसर की तरह उसके ऊपर मॉपिंग अप की ड्रिल करने जाएंगे. वही तूने किया, बम्बार्डमेंट कर दिया. नाउ आई हैव टू स्टार्ट ऑफ विद द मॉपिंग अप एंड मूव अहेड. Yeah, you're right. We are the first couple of the Jack branch couple, colonel couple of the armed forces of the world. And yes, everybody has a pride. I also have a pride, and she also have a pride. But that apart, we as a citizen of this country, we all have this one thing which is imbibed in the Indian Military Academy also. And this nation first. And that's what we all follow. Irrespective of our religious belief or whatever, nation come first. And we also follow the same thing. And after retirement also, you have a lot of responsibility. And with your experience, whatever you have gained in the organization, whatever you have learned, like I was a college vice president, Shia College vice president, and I always mentioned I feel proud. In 1996, I was the vice president of the college student union, and I was not thinking, or I have never even thought, I will be, becoming an army officer, but everything happened. Then thereafter, that initial grooming, the first step when I took in the IMA, that day I decided, okay, now onwards, I will go as per the law of the country and I'll abide by the Constitution of India. And still, believe you me, it is there in my blood. And since I belong to the family of freedom fighters, my Nanaji Chetram Azad was a freedom fighter, and Naniji was also, and Dada and all. So that's the one good thing. The basic qualities, what was imbibed when I was a kid and my sister was a kid. We both used to celebrate two festivals in the country of the nation. That was the Independence Day and the 26th of January. My mother used to make that झंडा छोटा छोटा होता है ना रात में तिरंगे का लगाने वाला, और we used to do all that thing रात भर, and morning sharp 8 o'clock
झंडा लगा करके घर पे जनगण मन स्टार्ट होता था। तो वो लगातार प्रैक्टिस ना वो फॉलो रही, एंड आई फील सो गुड कि व्हेन आई स्पीक टू यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, तो अच्छा लगता है। जब एसएसबी का भी होता है मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारा संविधान पढ़ लो, अपनी बेसिक क्वालिटीज ऑफ आर्टिकल 51 अल्फा का अपना जो ड्यूटीज है उसे समझ लो, यू नॉट गो रॉन्ग, you will never go wrong. It is something which speaks about the peace, love, not hatred, and maturity also. कि हमारे घर में हम लोग को पहले थप्पड़ मारा जाता था अगर झगड़ा हो जाता था, so that is called the maturity of the parents, which is lacking and which we have to gain back. That's what I was working, and yeah, of course, I have joined a legal profession and doing. I'm happy and satisfied with my profession also. But keep on doing all such tasks because I think and I feel that this is my basic requirement, which I can, if somebody inspire from me, it will, my message will also go. That is why that 100 meters formula, you must have seen my 100 meters formula and the comrade. So with your channel and through you, it's a good opportunity to tell everyone and the nation and the youths, what is this 100-meter formula? Before I come to the controversy part and all, we all are an Indian first, nation first, always and every time. There's no ambiguity and there's no doubt in the mind of any person. When you say nation first, that means you need to you need to have a good knowledge of your constitution because you are governed by that. People are not reading. The youth should read. The parents should teach their sons and daughters by look. This is what like a society is regulated by a society regulation. We all Indians are regulated by this country constitution. The moment you get all such things, the kid and all they will understand and they will then educate all the issues whenever it will come to their mind. Suppose somebody is passing some comments or something, when they are aware about the legal, when they are aware about the constitution, strict and constitution, then it will be easy for them to handle the situation and understanding and making their comment or making their opinion on the things, which is not generally, this is my, dream. And that's why I want from youth, within 100 meters, become a comrade. And for comrade, you don't require anything. If you want to become a comrade, we have two examples. You have seen one of my Twitter group. One is the soldier, Manik Shaw, whom we consider as a best soldier. Comrade means a soldier and a citizen. And citizen is APJ Kalam. I follow all these two ideas in my personal life also, and you learn so many things from them. So this is what is the, when you define a citizenship and when you have your ideas, you need to choose. As a soldier, I chose General Manik Shaw, Field Marshal Manik Shaw, and then as a citizen, if I look forward to anyone, this Dr. APJ Kalam, no one else. It's next to God for me. And I was fortunate enough that I gave a guard of honor under the command of Colonel P.N. Mahapatra when I was a youngster as a lieutenant in a Sikh Light Infantry. My unit, yes, my unit, 14 Sikh Light Infantry, and later when I got to 3 Sikh Light Infantry. The seniors, my commanding officer, General Ambu, and that time, my senior subaltern, Captain A.K. Singh, my company commander, now Brigadier Grewal. I have learned so many things. They have made me whatever I am today. Whatever I am today because of them. Then I always say, whenever I meet, sir is always there, a guiding factor is always there. When I went for the petition, I had that blessing. People are there to, see the good intention behind the petition. Now, what I say, the 100 meters, any citizen of this country, I have, we are soldiers, we given an area of responsibility. Like 2 kilometers, Major Mohommed Ali Shah will be looking after this 2 kilometers, and within this 2 kilometers parameter, nobody will enter inside this. Nothing will happen without your permission. That's what I am telling my youths. It's very easy. They can take it 50 meters, they can take it 20 meters also, because we have a lot of, we have a big population here. In 100 meters, if these youths, they understand the basic responsibility towards the nation, that's what I say. You don't ask what the government is doing. Do what you can do for the government and for the nation. You should always, before you sleep, go and check your 100 meters. Nobody is sleeping hungry. There's no injustice caused to anyone. There is, people are happy. And then you go to sleep, you have a sound sleep. You have a sound sleep. That's what the thing which I want that the youngsters should know. And they should feel pride. Yes, we are Indian. The other nation should learn from us. We are the one who are telling the whole world that, look, this is how the citizen is supposed to be. Then I always say, when an elected government is there, please support the government. Why? I have given my vote, but I have not got my choice of,
leader, but I should respect the leader and his commitment because you have given. So this is what which is lacking. Number of this thing are going on, uh, uh, debates and all, wherein one is speaking ill about the other. And the third, the important thing which is very important in our nation, which is required to be understood by the political parties, is if I am in opposition, I have to oppose, whether it's a good policy coming or a bad policy coming. This is a भले वो bad आप thing which we are सेंस having. whether you make sense or not, whether जो जो रूलिंग पार्टी है सेंस बोल रही है कि नहीं, पर ऑपोजिशन को अपोज करना है, वो Correct. समझते हैं उनका This is what. काम है, बस अपोज करो, This is what. कुछ भी And गलत you will काम not भी find, करो, अपोज करो. yeah, and you will not find this thing in the good nations, developing nation. They understand or go understanding isliye because they are aware about the constitution. They respect the constitution. Something happens, everybody, take out every grudges and all on the social media. And then everybody wants that Bhagat Singh should be there, but it should be existing in the neighbor's house, not in my house. Nobody wants to take that privilege. If somebody, police wala or somebody who is doing injustice, nobody will go and, interfere. Vishaka But judgment, you have luckily seen sir, now अभी what has थोड़ा happened बहुत to the girl. ट्रेंड हल्का हल्का बदलाव आ गया है, like now we found Aega, when aega, aega. now when we did Operation Ganga, 28,500 students we got from Ukraine back. That time opposition commended the work कि भाई नहीं ऑपरेशन गंगा अच्छा सक्सेसफुल हुआ और इस तरीके से. सर आपकी पलटन ना बड़ी खास पलटन है, 14 सीखला है. I will tell you my association with them, sir. You were commissioned in 2000 and in 97, sir, before you got commissioned से 3 साल पहले, 14 सीखला was in Manipur. My father was commanding a brigade at that time in Kakshan. तो जो कमांडर की जो क्यूआरटी थी ना, वो 14 सीखला की थी. और Colonel आपकी Malik was commanding that time. जी correct sir. And so that अनबू सर who was finally दर्शकों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो लेफ्टिनेंट अनबू साहब थे, जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑलरेडी रिटायर हुए थे, वो सर के पलटन के हैं और सर के ट्वाइसी थे और इनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं. और 14 सीख लाए तब मणिपुर में थी, तब उस टाइम पे लेफ्टिनेंट, नाउ ऑफ कोर्स कर्नल ब्रिगेडियर बन गए होंगे या फौज छोड़ दी होगी, पता नहीं, मैं टच में नहीं हूँ. That time Lieutenant Nandrajog was there. I was highly motivated by him. He was just a couple of years older to me, very young looking, young, बिल्कुल handsome. All army officers are. सर तो उनसे मैं बहुत मोटिवेट हुआ. और 14 सीखला के अगेन सेना मेडल, दैट टाइम लेफ्टिनेंट नवजीवन, वो हाल ही में कैप्टन बने थे उस टाइम पे, सेना मेडल, उनसे भी बहुत बड़ा इंस्पायर हुआ. तो मैंने भी फौज में गया फिर मैं उसके बाद. सर ये बताइए, सर लेट्स टॉक अबाउट योर इन्फेंट्री डेज. सर हाउ वर योर infantry days were very good. days? Some adventures. Learned so many things from the Khalsa Paltan. सबसे पहली चीज जो सीखी वो थी live like king size. No, live like king size. So Khalsas are like Sikh troops are. It was my what I say. I was fortunate enough to go to this regiment, best regiment I have ever seen, best troops. You name the thing and they will do it. That kind of, the Indian Army also knows. And in the during Vigo's course, something has happened. I'll not discuss in the public forum. But one officer said it's. One officer said when something happened, he said, Amit, it's Army, Navy, Air Force, and Sikh-Line. Army, Navy, Air Force, and Sikh-Line. Well, they can do anything. But that jokes apart, I had a very good experience with the troops and with the Ghataks. I was in Ghatak during the Operatra brigade commander, and that was the time when we had a lot of Josh. And your father was the div commander. I still remember. He took us to that area of operations, and I learned driving because of your father. I think if I do remember correctly, I was doing for, I think, some appointment I was doing, and he asked me, hey, youngster, go and drive the Jonga. And he will barely, remembering. But I said, sir, I don't drive. I don't know how to drive. That was the one thing. Okay, he, saw my CO, and that day onwards, my adjutant Mohit Chattawat sir, he started my training, and the training was not during the office hours. The training was after the food. So that's how I also learned that driving and all, and I owe to your father for that. And yes, during his command, 54 days, which has moved, and we had lot of Josh. And he made us, the atmosphere was so good. There were games and also that the people should not get frustrated because of long 8, 9, 10 months we were staying there in the desert, hot weather and all. But it was a day commander used to come with a jolly mood and
something or other used to be there. Okay, we'll have this game. Okay, we'll have this game. Troops ka game, ye game, Ghata competition, everything. Everything. Training was not compromised. Though we were aware about the task, within a warning order, we will move. That was there in the mind. But then he knows how to command. So that's why he also earned a lot of respect. He also retired as the Vice Chief of Army Staff and then honorable member of AFT, and given lots of good judgments also. The other things which I learned from the Paltan was, the officers cadre of us and the troops. One good lesson I just, me and my youngsters, there was heavy rain going on, and we were in the camp. I still remember my company commander, how they used to teach us. I'll just tell you. So I was running with my youngster to my camp, and suddenly I saw my company commander. He said, "What are you doing here, guys?" He said, "Sir, rain is going on, and I was just looking for that box of ours so that I can shift it here." He just said one thing, "And what about your troops?" And that was one thing, this is how they used to teach. They never used to say anything, but this is the lesson which we learned. One day I went to my company commander. Again, that time, Major Jawal. So Major K.S. Jawal, now he's a brigadier. So short, he'll become general also. I wish that he should be chief also. So one day, when I was, very much confident, I said, "Sir, I know everything of the company, sir." And he said, "Okay." Then said, "There's no work at all." Then he again took me to the company store and all, two, three things. And I was, no, yaar, learning is never stops. And just the same funda I followed when I joined the JAG branch. I fell into love with the lady officer, Col Amit Kumar. That time, Major Anu Dogra. I Ma'am was is, having an I injury think, in my hand. WSCS 24, Uh, sir. That's uh, 2004 commission, September 2004 commission. yeah, she So, was 51 commissioner. तो Then दोस्तों I'll tell you what has happened. आपको मैं बता दूं कि मैम जो है कल अमित कुमार साहब की वाइफ, वो मेरे से 1 साल के बाद, मतलब 2 कोर्स के बाद कमीशन हुई थी। मगर भाई हमारे लिए तो दो लेडी ऑफिसर्स हैव देयर ओन कैरिज्मा, बट हमारे लिए तो वो मैम हमेशा रहेंगी। दो शी माइट बी 1 ईयर जूनियर टू मी इन सर्विस, बट मैम आई वुड लव टू प्लीज convey my regards to ma'am. I think it's a very interesting story, sir. Let's hear that, sir. This interesting story is something like that. I was given task by one of my senior to go and receive the lady officer. At that time, there was nothing in our mind, we've never ever planned. So I went there and I was supposed to be going from a cremation. One of the cremation, I was in PCAP and all. So first time when I visited the railway station, I spoke to her. I said, "Don't get carried away that the officer come with a PCAP and receive the youngster. It's just because I'm coming from this ground." And then, during that period, there was junior senior relation, good relation. But when I was a bachelor, and people who are behind my life, they have to get married. I saw a good, decent woman in this officer, and I just because that feeling came because we both were in the some of the one of the regimental party, and my one of the senior, Colonel Anurag Gupta, I'll take his name also because he's also retired now. Seasick Life, Royal Chauthas. He told me that look, something is there, and this is a good girl, and you go for it. And the ma'am also said the same thing to the lady. Next day onwards, that Ghanti Bajna and Guitar Bajna was started, but you have to control yourself because you are an officer of the armed forces. And then I thought, no, I can't cheat with any of the officers. I'm having this feeling. And fortunately, we were invited in Taj Club, and that, you see, the dream comes true. A swimming pool, we were sitting there, and I just had a courage and said, "Okay, but what type of man you like in your life if you wish to get married?" He said, "I want this, 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 this." And my answer within 15 seconds was, "Okay, all these qualities are in me. Do you want to marry me?" And then my tension has gone, and thereafter we decided, and we conveyed this thing to our mother, my sister, and their parents, and then we decided not to, reveal all such things before the department because atmosphere gets. And then yes, before I leave, he got posted out also after some time, within I think 2-3 months. Posting was also awaited. Then then we informed the authorities also. This is what. So we had a good time. We had a good time as a husband wife, and we have a good son Anumit. Anu and Amit मिला के उसका नाम अनमित रखा है. पुणे में पंगा हुआ था थोड़ा सा मेरा. They were saying that you have to mention your caste and your this thing. I said no. If you want to mention Indian.
So that was one thing. But then they agreed, and now he writes Amit. Like my mother used to say, write only Amit Kumar, no religion, no caste, nothing. So that's one good thing. Now coming for the this, you know that sacrifices, this all image of the Indian Armed Forces. Today we have so many followers. We see youth, looking forward to us, saying that how army officers. I keep on doing this webinar of SSB, and I can see and I can feel that charm, towards the forces, to the uniform. We have a lot of responsibility as an officer. Uh, After retirement also, after veteran also, and towards the organization also. So this is the organization which has given you stand. I always go to this organization. Today, whatever I am, because of this organization. They have given me, and yes, I have got this courage of speaking whatever is correct. If some people are there in the organization, and I have that thing, because it is my moral duty also, and it is expected also from an officer. Uh, this thing has happened before that. One Ekta Kapoor serial has come. Then also I supported one officer who was behind this. Behind this, I received a call from one of the officers, serving officer, and then from this serving special forces officer. He said, "Sir, टाइम मिलता है इन लोगों को तो देखते हैं लोग भी भाई बैठ के वेब सीरीज आ रही है एंड वेब सीरीज वेरी गुड लेट मी टेल यू अजय देवगन का रोल एंड दैट रुद्रा वेब सीरीज इज वेरी गुड नो डाउट नो एम्बिग्यूटी मैं तो मतलब बिल्कुल क्लियर कहता हूँ आई ऑल्सो एंजॉयड बट द पार्ट जो उसको जो उन्होंने जो गलती की है वन ब्रिगेडियर ऑफ एसएफ फोर्सेस वर ट्रीटेड एज ए मतलब शोन एज ए क्रिमिनल यार ड्रीम भी नहीं ऐसा ड्रीम में भी नहीं आएगा स्पेशल फोर्स का बंदा और द लैंग्वेज व्हिच वाज यूज्ड बाय यू गॉड। मस्ट है ना और जो उसका ऑफिसर का जो बेटा है वो भी एसएफ फोर्सेस में यार दे आर द प्रोटेक्टर्स they are the one who die because of and they don't know ki who for whom they are dying at least become a worth citizen you are earning because of their name I सर ये felt सर मैंने फिल्म bad इंडस्ट्री करीब से देखी है। मैंने खुद वर्दी वाले रोल करे हैं कई अक्सर कई फिल्मों में। सर लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, ये माय पर्सनल बिलीफ, हालांकि 15 अगस्त 26 जनवरी को ये लोग वीडियो निकालेंगे, वायरल करेंगे, अपना वीडियो निकाल के भाई हम फौज की बहुत इज्जत करते हैं, ये है वो है, और बट ऑन ग्राउंड सर, यू हैव सीन इट, आई मीन इट इज रिडिकुलस टू से द लीस्ट एक्चुअली, without I mean it is, I mean I'm not taking any actors or any productions names, but it is really, I mean it is actually the kind of respect that the armed forces actually deserve. वो दूर yeah दराज इलाकों में दोस्तों अपने परिवार से दूर छुट्टी नहीं मिलती, खाना पीना ढाम पे ढंग का नहीं मिल पाएगा, फिर भी बिना शिकायत करे अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी हिफाजत करते हैं आप लोगों के लिए। एंड व्हाट दे वेयर इज नॉट अ कॉस्ट्यूम, इट्स अ यूनिफॉर्म। जब मैंने अब फिल्मों तो में करी, सर अली अब तो ये भी बोलने में शर्म आती है अब तो ये भी बोलने में शर्म आती है बिकॉज कितनी बार बोलेंगे सब चीजें तो फील करने वाली कि हम आपके लिए हिफाजत करते हैं हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं मुझे कहने में अब शर्म आने लगी बिकॉज तब क्यों आती है क्योंकि वैल्यू जब नहीं है जिस पॉइंट की उसको बोलने का क्या फायदा है ना सही बात, कितनी सही बार बात। कितने ऑप्शन ऐसे बोल चुके हैं बेस्ट थिंग इन आवर कंट्री इज आवर सिटीजन ये जो बंदे हैं हमारे जिनके अंदर जोश भरा हुआ है यूथ एंड द कंट्री सिटीजन दे आर द वन बिहाइंड आवर they कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर दे आर द वन विद जैसी ये बात हुई एवरीबॉडी केम टू मी दे मतलब स्टार्टेड सपोर्टिंग दैट्स द लव एंड रिस्पेक्ट यू हैव अर्न रियल हीरो वर्सेस रियल हीरो एक ने पोस्टर लगा रखा है मेरा कहीं पे मैंने बोला भाई नेशनल अवार्ड विनर है उसको ऐसे कुछ नहीं बोलो आई डोंट नो आई गॉट a legal notice from them from one of the reputed firm I said either you have not understood the contention or Mr. Devgan has not understood the contention. That was not the legal thing. That was a not an advocate who was speaking. That was an ex-veteran who was speaking. I told Oh him, my yeah, थोड़ा goodness, तो हाँ नहीं notice that please take all this stuff out from the Twitters and all. ये मैंने कहा over my dead body. That's the only one answer I've given. Over my dead body. उसके बाद जो करना है वो एक्चुअली गलत गलत जगह हाथ डाल देते मगर हैं एक तो आपने एडवोकेट ऊपर से बोल आपने आप जहां जो भी मैंने देखा है कुछ गलत नहीं डाला। वॉट एवर आई हैव सीन, वॉट एवर let यू the हैव judges decide मेक जब भी कंप्लीट आएंगे वो सेंस, जजेस I have told him advised him and I have no एंड इट मेक्स ambiguity कंप्लीट। I stay firm with my words and I stay firm with my ideas what intention was there I will not kind of taking pressure or not by sending a legal notice I don't get into all that क्या कर लोगे यार जान हमें अपनी जान की परवाह नहीं होती तो ये तो छोटी सी चीज है यार वर्दी और सर दूसरे ऐसे ऑफिसर्स फौज इनको के मालूम ही ग्रुप्स नहीं है में आग लग गई, जितने भी फौजी ग्रुप्स हैं उनको मालूम पड़ा कि आपको
एक लीगल नोटिस आया है फ्रॉम अ प्रोडक्शन कंपनी, everyone got this thing fiery. Sir, I would not be surprised if the entire army would ultimately get off and say, we are behind you, we support you. The army and organization was behind. The government of India has taken out Course, the letter. That's the of one thing they course. also understood. Because ये जो अर्न होती है, you are making an image of an officer towards the यार 80,000 बंदे पूरा वो अपना दिमाग लगा के एक ऑफिसर के पीछे। अब मैं क्यों जरा सा भी ऑर्डर डालूं उनके दिमाग में, जो बेचारे भोले भाले बंदे एक उस पे कि जा आगे जाके खड़ा हो जा, सोल्जर बन के आगे जा रहा है, गोली पहले उसको बेचारे को लगनी है, मैं क्यों उसके अंदर में डाउट डालू यार। और दूसरा, पैसे कमा लो, मैंने मना नहीं किया, आपके पास तरीके हैं पैसे कमाने के, आप अच्छी रेपुटेशन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझिए। अभी जैसे एक अक्षय कुमार का एक एग्जांपल अभी देखा है मैंने लेटेस्ट, उसने कोई टोबैको वाला ऐड किया, उसके बाद जब पब्लिक ने उसको बोला, ही रियलाइज कोई छोटा नहीं हो जाता इस चीज से। आई डोंट नो, मुझे अगर मेरी गलती होगी तो मैं माफी मांग लूंगा, मुझे कोई वो नहीं है, मैं छोटा नहीं होता इससे। थिंग इज दैट कि जब वो बंदा भी बेचारा आके नोटिस But निकाल के बोल I रहा है कि नो also आई think वांट it's immaturity, sir. It's immaturity. आपने जो इमेच्योर। ट्वीट डाले, जो भी मैं देखे, I don't know उन्होंने क्या देखे होंगे, उन्होंने क्या डिसएग्री कर दिया होगा, देयर जो वाज मैंने वन डाले ओनली थे वो सिंपल very थिंग, ही शुड हैव valid, सेड आई एम very सॉरी। mature, and it was या very immature to anybody, for that matter, anybody to send you a legal notice for that. उससे उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो भी आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, उसे जगताई उन्हीं की होगी अल्टीमेटली। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम है दैश और रिगार्डलेस, जो दिल में आएगा कहेंगे। देश सबसे पहले, नेशन, और उसके बाद चैटरूट करो, तुम्हें मालूम है सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द मैन यू कम कमांड कम नेक्स्ट। ठीक है, आई एम नॉट कमांडिंग, बट देयर वेलफेयर एंड रेस्टिंग इन वट एवर कैपेसिटी आई कैन, आई विल ऑलवेज सपोर्ट द फोर्सेज, एंड दैट इज वॉट आई एम डूइंग इट। ये वेरी ट्रू। इतनी बड़ी चीज जो है, जो इतने मार्टिर्स जितना कुछ करके गए हैं, वो इतने आसानी से कुछ लोगों की वजह से नहीं जाने देंगे। एंड बीइंग ए वेटरन, दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू टेल देम, लुक यू आर रॉन्ग, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी सीरियल, एटलीस्ट एक बार किसी से बात कर लो। इतना पैसा लगा रहे हो, फौजी तो फ्री में एडवाइस दे देगा। तो सिंपल है यार, तुम क्रिमिनल बना रहे हो तो किसी और तरीके से बना दो, तो कोई भी ऐसा ऑफेंस बना दो जो मतलब वन कैन मेक आउट कि हाँ ये हो सकता है। बट ऐसी चीज जिसमें तुम लैंग्वेज भी इतनी डर्टी यूज कर रहे हो एज ए पुलिस ऑफिसर, एंड ही हिमसेल्फ वाज यूजिंग दैट लैंग्वेज, दैट्स वाज द मेन पॉइंट। You can't say that कि डायरेक्टर ने थीम की वो थी, व्हाट थीम की यार, यू आर रिस्पांसिबल मैन, you are a matured man, you have acted as a फौजी in many of the series। कैप्टन मनोज पांडे का रोल किया भाई ने, तो ट्रू सर। क्या, he may be watching this, so my message to him is, be a man and say that yes, there is a mistake which has happened, I'll not repeat it again, we take it। हमारा सोल्जर्स का दिल बहुत बड़ा होता है, हमें कुछ नहीं आपसे चाहिए, ना ही कुछ को चाहिए, बट रादर देन इनके वो कहते हैं ना, इनके जो साथ वाले हैं वो बोलेंगे पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, तो बिजनेस माइंड, यू नो, दे विल ओनली थिंक विद दैट छोटा मोटा चीजों को। कोई बात नहीं, भाई जस्ट टोल्ड दिस आल्सो कि भाई ठीक है, नेशनल अवार्ड विनर है, ही इज अ गुड एक्टर, आई आल्सो हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन, बट for not for the bad thing which you committed, you have to commit, you have to accept, and you have to say that yes, there is a wrong thing which has happened. Even those who are the production house, they are sending, before sending a bloody notice to me, you should have seen that letter and read it properly. I don't know who are their advisor and who are interpreting my letter. Any single chap of this country will understand these are the emotions and they are advised, not that I am threatening you with something. But I think we should not discuss more about this. नहीं This नहीं, go ahead controversy sir, will keep इनफैक्ट on. आप you must talk about it because many of us don't even know controversy क्या हुई थी, you know। इनफैक्ट आपने मेरे को ट्विटर पे भेजा था, तो मैंने आई Yeah. सेंड यू अ क्वेश्चन मार्क, सर ये क्या है, ये व्हाट इज, आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड। फिर आई वेंट टू द बैकग्राउंड ऑफ इट, फिर मैंने इसको देखा, मैं अरे दिस इज व्हाट आई डोंट नो, आई मीन इट इज व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लाइक मेरे सर माय इमीडिएट अकेडमी सीनियर फ्रॉम SF75 में संदीप सांगवान, he was a defense consultant for this film called Pippa, जो इसमें ईशान खट्टर, शाहिद कपूर younger brother, he's a very dear friend of mine, like a younger brother to me in fact, Ishan. So Ishan acted as an armored co-officer in that. So I was in touch with Sandeep sir, I should tell him sir, ऐसे like ये है, and Sandeep sir used to always be very very diligent on the set, he gave proper consultancy, and अब जाके hopefully यहाँ पे, क्योंकि नाउ दिस आर टेकिंग डिफेंस कंसल्टेंट्स, सर आप इतने पैसे बना रहे हो, आप नहीं वो फिल्म वाले, they can easily take a professional defense consultant on set.
सर अवरोध एक वेब सीरीज आई थी ऑन सर्जिकल स्ट्राइक्स, इनफैक्ट आई एक्टेड एज अ पैरा कमांडो इन दैट. मेरा फौज में आने का मकसद ये था टू वेयर अ मरून बेरेट, क्योंकि सर 54 डिव में यू रिमेंबर ब्रिगेडियर शशि खन्ना, ही वाज द डेप्यूटी जीओसी, तो वो या पैरा या कमांडो, सो ही या ही मोटिवेटेड मी आल्सो. तो फौज में तो मैं मरून बेरेट पहन नहीं पाया इन रियल लाइफ, तो मैंने रियल लाइफ में पहन ली अवरोध में पैरा कमांडो बन के. उसमें आई सेड कि भाई वर्दी ऐसी होगी वैसी होगी, भलाई डायरेक्टर हमारी बात माने या नहीं माने, आपने अपना काम कर दिया एज कंसल्टेंट. बट यू कैन नॉट मेक अ कार्टून आउट ऑफ एन एक्टर. फौजी वर्दी पहना रहे हो, आप क्या दिखा क्या रहे हो? फौजी ऐसे थोड़ा ना होते हैं. फौजी फौजी वर्दी भी तो आप अजीब बैठे सी है. हैं, मैं बैठा हूं, तो हमारे दर्शक देख रहे हैं भाई, फौजियों को जो दिखाते हैं अक्सर, इट इज नॉट, दे आर, लेट मी टेल यू जेंटलमैन, दे आर द ट्रू हीरोज. आई हैव सीन इट इन रियल लाइफ सर. आई हैव सीन माय फादर एज अ हीरो इन रियल लाइफ, and his brother Nasir Saab, Mr. Nasir Shah is hero in real life. तो वेरी real गुड. और real का मैंने combination यहाँ पे देख लिया है. So, but then what happens? I'm sure a lot of people would want to know, and people keep following you on Twitter. No, see, if you look his movies also, जो मेरे को यंगस्टर्स पार्टी भेजने लगे थे ना, फिर कई सारे मैसेज आने लगे थे पर्सनल. So one of the message was, sir, he have forgotten that Major Saab movie when he was a cadet. एंड सी जो कैरेक्टर, जो करियर जो आदमी का बढ़ता है, वो सारी ज्यादातर मैक्सिमम मूवीज जो है वो आर्मी की मूवीज है. मे बी आई थिंक क्या है कि उसको गुड सेंस शुड प्रिवेल विद द एक्टर, एंड ही Sir, शुड movies कंसीडर ऑल सच are एस्पेक्ट. such an influencing factor that कहीं पे जब मैं लोगों को बोलता हूँ ना, मेजर साहब बड़े यंग मेजर हो, बड़े जल्दी मेजर बन गए. अभी where my course are commanding, they are full colonels. अगर मैं फौज में होता और had I continued and had I done well and had I been lucky, I would have probably have been a colonel साहब. मगर सुनते ना मेजर साहब, नहीं नहीं नहीं, इतनी कम उम्र में मेजर कैसे बन गए? Why? I will tell you why. They have this impression because अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी ना मेजर साहब, एक पंजाबन उसमें पंजाबन की पटक का दिल चुरा के ले, that song. So people are like मेजर साहब, तो they have this impression कि मेजर साहब is almost 60 years old नहीं and नहीं, बट एक नहीं नहीं सुनो, अली, इफ यू रिमेम्बर दैट टाइम ऑफ मूवी, दैट टाइम आई थिंक मेजर यूज्ड टू बी अ सुपर सेलेक्टेड. जब मेजर्स होते थे तो उनकी एज इतनी होती. वो तो बाद में व्हेन दिस थिंग हैज कम, तो वो सही थे, दे वर राइट ऑन दैट पार्ट. हमें मुझे भी अपने, अभी जब मैं कोर्ट वगैरह जाता हूँ तो मुझे भी ये होता है कि यार यू कर्नल रिटायर्ड, यस आई एम रिटायर्ड. तो दे डोंट से दैट यार कहीं से लगता नहीं तेरी 21 साल सर्विस कंप्लीट हो गई है. मैंने भाई हो गई कंप्लीट 19 से, तो मैं आई वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट. अभी जब मैं गया था अपना मार्कशीट वगैरह लॉ की लेने, बिकॉज आई एम डूइंग एलएलएम आल्सो लास्ट सेमेस्टर, तो वो भी बोलने लगे यार स्टूडेंट ही है लगता है. तो ये चीज है ना, these things keep on coming, and then you feel proud of the organization कि आपको बम्बू वम्बू दे करके आपको ढंग से सही से रखते हैं. और फिर वो आदत ऐसी डाल देते हैं कि जब आप रिटायर्ड होते हो तो देन ऑल्सो यू गेट अप एंड वेक अप एट द टाइम, एंड फिर अपना वो कैरी ऑन करते हो जो आपकी, बिकॉज वो ऐसे पूरा का पूरा ना आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ही वैसे सेट हो जाता है कि अगर आप ये नहीं करोगे 3 दिन मजे कर लोगे, उसके बाद फिर अगेन यू हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स. तो वो चलता रहता है. बट अभी जो if what we are discussing, the youths of this country has to understand, as an officer, as a retired veteran, and knowing people, this is our responsibility. Whoever is coming to us and asking, sir, what should I look for? There are many defense aspirants which are, they are attached with me. I've got a group, broadcast group. I've kept it for these youths. The only thing, if something new will come, I'll distribute to them so that they can also understand. तो अभी जब भी वेबिनार वगैरह होता है, लास्ट टाइम भी करेंगे, we are supposed to be telling them, look, you need to SSB के लिए भी, you need to just be a good man, nothing else, because nobody knows what is expected, and then look forward for the other things also. और ये जो एक अच्छा नागरिक पहले बन जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अच्छा नागरिक वही आर्टिकल 51 अल्फा, ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन. फंडामेंटल राइट्स को बाद में मांगो, पहले ड्यूटीज तो करो अपनी एज ए सिटीजन. वर्थ बी ए सिटीजन, वर्थ फाइटिंग फॉर, लाइक आवर फोर्सेस से. कितने सारे मार्टिर्स गए हैं लोग, बिल्कुल आना चाहिए सबको फौज में, लेकिन वो जो बेसिक क्वालिटीज हैं, जो रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द कंट्री, फ्रॉम द नेशन, हैज टू बी देयर. कॉमरेड्स वाला जो कॉन्सेप्ट चला रहे हैं ना, वो कॉमरेड्स वाले कॉन्सेप्ट में यही है कि देयर इज नो पॉलिटिकल विल, एवरीबॉडी, देयर इज नो लीडर इन देयर, एवरीबॉडी इज हैविंग दैट 2-3 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसी पे उसको एक्ट करने के बाद काम खत्म हो गया, कहीं भी खड़े हो गए. लेकिन इट इज समथिंग लाइक व्हेन पीपल यूज्ड टू स्टैंड कि भाई हाउ कम यू आर giving this thing to him where he is not authorized.
calling the public servant, and public servant should realize that they are not public master. My aim today as a veteran is working on these aspects. The day one rickshaw wala will be able to go to a police station, says that, look, you have infringed in my fundamental rights, that day will be the real liberty, real freedom. What I feel, because the things which comes to a people had, like in army, हम लोग के अंदर में नहीं आता, कोई पब्लिक का भी बंदा आता है तो चाहे वो जनरल साहब हो चाहे वो लेफ्टिनेंट साहब हो, बड़े इज्जत से बात करता है. इट इज नॉट दैट कि देयर सम शो ऑफ और समथिंग. बंदों को लगता है यार ये कर्नल साहब है, ये ब्रिगेडियर साहब है, कितने आराम से बात कर रहे हैं, बिकॉज हमें उसे सिखाया जाता है कि वी आर सर्वेंट ऑफ द पब्लिक. हमारी पब्लिक को जिस दिन ये पता लग जाए कि भाई they are your servant, you are giving them pay, they are not master, and if they are saying that they are not able to, अनएम्प्लॉयमेंट भरा हुआ है यार, बाकी लोग बैठे हुए हैं काम करने के लिए, मोटिवेशन, आप हटो दूसरा आएगा. तो सिंपल ये चीजें जब पता लग जाएंगी तो ऑटोमेटिकली देश सुधरेगा. और अभी हमें यही करना है. लेट्स बिफोर आई डाई यार, आई वांट टू सी दैट कंट्री इज प्रोग्रेसिंग. वी हैव अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट. इंटरनेशनल फोरम में बढ़िया चला के रखा हुआ है. अभी वो अपना स्टैंड बना हुआ है कि इधर वाली पार्टी भी आ रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वाली भी और सेकंड वर्ल्ड वाली भी आ रही है. और ये चीज बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है. जम्मू कश्मीर जब जैसे हाथ में आया, दीज आर द स्टेप्स व्हिच हैज टू बी टेकन. मतलब और ये है कि सपोर्ट भी करो, बट कोई चीज का विरोध करना है तो फिर उसको उसके तरीके से करो, इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर. हर चीज जाती है, अगर कुछ नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करो लड़ने के, इधर उसके करने के, और बाद में गवर्नमेंट सिलेक्ट करो, सोच समझ के करो. बिल्कुल, तो अगर वो सारी प्रोटेस्ट चीजें करना है तो पीसफुल तरीके से करो, फिर यू हैव योर यू लिबर्टी, हैव यू योर, हैव योर या पॉलिटिकल यू हैव राइट योर फ्रेंचाइज. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ इंडिया. कॉमरेड्स में ना ये भी नहीं है. कॉमरेड्स में मैंने ये भी बोला है कि नो बडी विल अफेक्ट एनी बडीज फ्रेंचाइज. राइट, इट्स योर राइट. इट्स योर प्राइवेसी, इट्स योर राइट टू सिलेक्ट योर ओन लीडर. तो दैट्स द वन थिंग, गुड थिंग इज दैट. और चाणक्य ने बोला था ना पहले कि सेना का जो कहते हैं ना, जो अभिमान है वो उनके सृजन से निकलता है. जिस देश का सृजन जागरूक होता है उस, और सेना का आदर और सम्मान करता है, उस देश की सेना कभी भी उसको फेल नहीं करेगी. एंड बिलीव यू मी, इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस, सॉरी आई विल से, इंडियन आर्म फोर्सेस हैव नेवर फेल्ड द नेशन, जब जब नेवर एवर हम फेल्ड. बोलते हैं दोस्तों, जब हम बोलते हैं इंडियन आर्मी, हमारा कहने का मतलब होता है, तात्पर्य ये होता आर्म है फोर्सेस, फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स आल्सो इंक्लूड. हम लोग फौज से ना, तो हम लोग आर्मी यूनाइटेड से, की लैंग्वेज. हमारे मुंह से निकलता है, बट वी एक्चुअली मीन दैट. Yeah, यस सर, प्लीज yeah, प्लीज yeah. सर. But राइट. no, this thing to Air Force and Navy guys are equally good, and the paramilitary forces also. BSF guys are doing well, CRPF guys are doing well. Uh, Everybody who is working for the nation, standing as a guard or standing as a security, he is working. There's no, even police also, they are also working. They are, all are supposed to be respected. Only thing is that, but we should know where to hit and when to hit. Absolutely, sir. Sir, tell us about after Forge, once you came on release from the army. How has life been for you after that, sir? This is a social channel. Shall I tell you the truth? हाँ, बिल्कुल, Let's see बिंदास how बात does करिए, happen. बिंदास बात करिए, The खुल के day I बात got retired, I had a lot of dreams. I will do this, I will do that. And the corona times were going on, so I was more into this typing messages, broadcast group अपने बना के सबको भेज देना. People must be thinking किसको भेज रहा है यार, क्यों भेज रहा है यार. बट मुझे लगता था यार कभी तो खुलेगा यार, कुछ तो करेगा. एक हाँ, आदमी अगर देख लेगा भी बहुत है, नहीं देखता बात अलग है उसका अपना. बट एज ए एज ए सोल्जर, एक्स वेटरन, लगता है कि वेटरन, ऐसा लगता है कि यार यस, आई डिड माई ड्यूटी. आई टोल्ड वन चैप एटलीस्ट कि भाई यू शुड बी डूइंग ऑल दिस थिंग, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. टाइम बिजी रहा ज्यादातर चीजों को पढ़ने में. एंड पढ़ने के अलावा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सभी की. तो आई वॉज लुकिंग आफ्टर द किड एज ए गुड फादर. एंड अनु हैज अ लॉट ऑफ रिलीफ बिकॉज आई वॉज देयर विद हर. तो उसमें भी टाइम लगा, लेकिन उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ जो मेन काम है. फिर चलता रहा, मतलब आई एंजॉयड. एंड आफ्टर दिस साइड, say this side of air is also good. You can enjoy. Basic thing is that the happiness is inside within. You don't have to search for it, look for it. So I was happy, and Anu was also happy. To, when the couple are happy, then there's no problem at all. sir, So, and it and was your pension is humility. respectable. It was your humility in the beginning, sir. It was you being very modest and humble and saying that नहीं ऐसे भी following, sir. You have a huge following. A lot of people, जब हम organization का नाम लेते हैं, आपका नाम सामने आता है. कुछ चंद एक नाम आते हैं, सामने आते हैं. In fact, आपके सर, आपको, I don't know if you are aware or not. I think you should be aware that एक a little bird told me this. एक दुकान है सर, दुकानदार ने आपकी फोटो अपनी दुकान में लगा रखी है. दो आपको ये फोटोज मैं लगाई है मेरे पास.
या तो ये सक्सेस होती है। अभी उसका नाम है शहरी ठकरान, भौगोलिक रोज करके एक उसने अपना छोटा सा दुकानदार है वो, और मोटिवेशन हाई है, लड़के बहुत अच्छे हैं। मैं मिल चुका हूँ उस लड़के से, बिकॉज जाहिर बात है कोई इतना प्यार करता है तो आपको जाना भी जरूरी है। मैं इतनी कोई बड़ी शख्सियत भी नहीं हूँ। और आप ही हैं, फील्स आप प्राउड। हैं, आप हैं, नहीं नहीं, आप ही बड़ी फील्स शख्सियत प्राउड, हैं। he feels proud. So one thing, what good thing message when I found that message was very good. Message was we respect our armed forces. It gives discount also. And once Anu will come, we'll have another cup of tea there. अभी तो एक कप चाय मैं पी चुका हूँ उसके पास में, बढ़िया कॉफी बनाता है. People will thinking that they have now become a brand ambassador, but it is nothing like that. It's something, yes, it's a good gesture. People feel good. I also felt good and honor, as well as it's something, that affection when somebody tries to make such gesture, everybody feels good. I also had a good and proud feeling that look, yeah, youngsters are also watching and they are doing something and they've understood what is the main intention of my dream of 100 meters. ये जो 100 मीटर का फॉर्मूला है, ये इसका वजह क्या है? बस यही है और कुछ नहीं है यार। ये 100 मीटर समझ में आ जाए किसी को ना, तो देश बहुत अच्छा कर जाए। 100 मीटर में ना सारी चीजें हट जाती, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। 100 मीटर में ये जो दंगे वंगे हो रहे हैं ना, एक दिन 100 मीटर ही सॉल्व हो जाए, वो वहीं बंद कर दें। प्लीज सर। भाई कोई नहीं आ रहा है, कोई हिसाब और कोई वो लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग हर जगह जो रूल है वो फॉलो दोस्तों ये करेंगे, देखिए, सब यहाँ पे खत्म हो। एक तरफ जहाँ पे दंगे हो रहे हैं ना, वहां पे मेजर मोहम्मद अली शाह कर और कल अमित कुमार इस तरीके से बैठ के भाइयों की तरह बात कर रहे हैं। क्या कहीं पे आपको लगता है क्या हिंदू मुस्लिम? भाई हमारा तो नहीं, आर्टरी में, नासिक में आर्टरी सेंटर है, वहां पे एक ही स्क्वायर पे। एनीबडी लुक अली, लेट मी टेल यू, मैं भी झूठे से बोल देता हूँ। एनीबडी इधर फ्रॉम हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी, ही हैज टू बी पनिश्ड। और मैंने ये भी बोला था कि कम्युनिटीज को चेक करना जरूरी है। यू आर ए मुस्लिम, दैट यू नो दिस थिंग। कम्युनिटीज को चेक करना जरूरी है व्हेन उनकी कम्युनिटी से ज्यादा बंदे निकलते हैं। इट शुड बी टेकन एज ए स्पोर्टिंगली, नॉट दैट कि समबडी इज बीइंग, तुम हर बार अपने उसमें बोलते हो कि भाई मैं बोल रहा हूँ खड़ा होकर, मुझे मैं सुनता हूँ तुम सही बोलते हो, तो कि भाई हमें चेक करना है अपने अंदर कि कौन क्या कर रहा है, उसको सही राह पे लाना। ना कि हम किसी चीज में, यार पीसफुल आदमी है, पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। हेटरेट नहीं चाहिए, बहुत हो गई हेटरेट, बिल्कुल। कुछ नहीं मिलना। ये जो ट्विटर फाइटर्स और ये जो सोशल मीडिया फाइटर्स है ना, ये भगत सिंह नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कई लोगों को मरवा दी। तो इट्स बेटर कि इनसे दूर रहे, सुने इनकी, करें अपने मन, और अपने मन की, अपने कॉन्शियस की, कि उसी बंदे के साथ तुम सुबह से लेके शाम तक खेलते रहो, बचपन में 14 साल तक बड़े हुए, अचानक उसी को मारने पहुंच जाते हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, ये एक टाइम लगेगा। और फिर वो किसी चीज के पीछे पड़ना, वन शुड नॉट गेट इन टू ऑल दिस। मैंने फिर से वही बात बोली, अगर आप अपने देश के नागरिक हो तो आप 51 अल्फा को समझोगे, नहीं हो तो भाई संविधान चेंज कर दो, फिर हम भी अपनी मेंटेलिटी चेंज कर लेंगे। और चेंज दोस्तों द देखो कॉन्स्टिट्यूशन। नासिक में, जहां जिस जिस पलटन का मैं हूं, आर्टलरी का, वहां पे नासिक में एक स्क्वायर है, वहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एक जगह पे है। दैट्स व्हाट, सो तुमने अपने घर, अब मैं विदेशी तुम्हें अली को बताऊं, सीखना चाहिए फौज तुमने से। मंदिर में जाके, लोग बोलते हैं ये हनुमान जी का वो नहीं किया, तुमने किया नहीं किया, सब बिल्कुल करते हैं, किया सर। किया ना, तुमने किया। अब वो कोई पूछे तुमसे डंडा देके कि क्या ये करते हो, तो एक अंदर से वो आती है, यार क्यों पूछ रहा है। मुस्लिम्स के रोजे होते हैं, कैसे हम लोग करते हैं, हम चारों लोग कैसे मिल करके रहते हैं। इंडियन आर्मी इज द बेस्ट थिंग इफ समबडी वांट्स टू लर्न दी सेक्युलरिज्म, रियल सेक्युलरिज्म। एब्सोल्युटली, समझ में आता है कि भाई हमें ऐसे। और उसके बाद क्या है ना, अटैकिंग दैट दोज हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीस, अटैकिंग दोज हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग सर, पीस। एग्जैक्टली। यू हैव टू बी सर, केयरफुल। ओनली sir, थिंग इज इंडिया। secularism. Sir, my father, being a Muslim officer, became a lieutenant general, the deputy chief of the army staff. So वहीं पे दोस्तों दिख रहा है कि भाई कहाँ पे एपीजे कलाम, तासुब है, कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, एपीजे यहीं पे। कलाम, कलाम इज वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, दिस नेशन। करेक्ट। तो अल्लामा इकबाल लुक, ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो आप देखिए, तो हमको मिलजुल के रहना चाहिए दोस्तों, वी शुड ऑल लिव टुगेदर। एनीवे डोंट सर, गेट बहुत इनटू बहुत दिस। उस पे, लेट अस टॉक मोर ऑन सर योर आइडिया ऑफ जो फिल्मों में इन जनरल अबाउट द फौजी वर्दी और जिस तरीके से फौजियों को दिखाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नो वन इन पर्टिकुलर, लेट्स टॉक अबाउट दैट, बिकॉज अक्सर मैंने देखा कि आर्टिलरी का बैच लगाया है, सीक लाइन का लाइनयार्ड। आई वाज इन कन्वर्सेशन विद ब्रिगेडियर विजय चोपड़ा, आपके सीक लाइन के हैं कि हैं सर, ही इज प्रियंका चोपड़ा, बल्कि बल्कि ताया, so he's from Sikh line, Vijay Chopra. He was the MA to the chief of the army staff, General VP Malik, when the Kargil war was on. So he had a lot of anecdotes to share, in fact.
So I asked him, sir, what is your idea about the films in फिल्मों में जो दिखाते हैं? Okay. So he had his opinion. And of course, sir, he is a hardcore inventarian, a thorough gentleman, and wonderful, sir, wonderful mentor. In fact, I learned so much from him. And he keeps. So let's talk about, sir, your views about before all this happened, about ये legal उसमें चले ये वो. आपका जो as a फौजी, when you would watch फौजी films, सर आप देखते थे खून खोला था नहीं खोला था, देखिए कि ये लोग बिना रिसर्च करे कुछ भी दिखा रहे हैं भाई. मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक बंदा है ग्रैंड मास्टर शिपूजी शौर भारद्वाज, हाँ, I know जिसको very लोगों well, ने I बहुत know. बदनाम किया. हाँ, मैं बता रहा हूँ, जिसको लोगों ने बहुत बदनाम आपका किया. खास पेट्रियोटिक दोस्त ऑफ है हाईएस्ट वो. ऑर्डर. मैं तो, आपका हम दोनों खास ऑफिसर्स दोस्त हैं. है. वो बिकॉज आई वाज इन सर्विसेज, सो आई कुड नॉट स्पीक दैट टाइम. बट किसी बंदे ने उस आदमी का मोटिवेशन नहीं देखा. आई हैव सीन दैट मोटिवेशन. ही वेंट टू सीबीएस सरोल. सीबीएस सरोल गया बंदा, बिना एक पैसा लिए, अपने खुद के खर्चे से यार, एवरी टाइम 26 जिम का घातक प्लाटून तैयार. उसने बोला एनडीए भी गया. उसको बदनाम कर दिया लोगों ने, बिकॉज he was giving these whatever he has imparted free of cost to everyone. Just see his love, and you make him एक ही दिन में जीरो बना दिया. कि अगर उसको यार, जो आदमी कोई ट्रेनिंग करने आता है तो अपने फौजी ना कोई बैच दे देते हैं. उस बेचारे को वो मार्कोस वाला बैच दे दिया बंदों ने. आई हैव सीन बैच लगा लिया उससे, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी कर दी लोगों. एंड आई वाज फेल्ट वेरी बैड कि यार हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी कांट रिवील ऑल सच थिंग आउटसाइड द मीडिया एंड ऑल. उसके सर ऊपर शिपूजी इंक्वायरी, के एक आपने एफआईआर जो हमारे ऑफिसर ने कर दी. सर शौर्य एक भारद्वाज का एफआईआर क्या है कि हमारे एक वेटरन ने कर दी. मैंने उसको फोन किया, आई नॉट नेम, पॉलिटिकली कनेक्टेड यूपी में. मैंने फोन किया एक को सीनियर, मैंने कहा सर व्हाट आर यू डूइंग, एटलीस्ट यू शुड नॉट डू. आई एम टेलिंग हिम ही इज द राइट पर्सन, नाइस गाय. और उसको वैल्योर और ये सब पता नहीं क्या यार. आई फेल्ट वेरी बैड. ही इज द वन व्हेन बागी 2 वाज गोइंग ऑन और वो गोगई वाला केस था ना, ही आस्क्ड मी कि अमित सर कैसे क्या करना. एंड यस, व्हेन यू नो दैट की इंटेंशंस आर गुड, एंड पैट्रियोटिज्म देखना है इस बंदे का. यार लड़कियों को ट्रेन कर रहा है फ्री में. मुझे मतलब ऐसे बंदे होने चाहिए देश में, जिनके अंदर वो मुंह पे बोलता है. मैं उसके वीडियोस फॉलो करता हूँ. आई लाइक दैट गाय, हैड अ गुड फ्रेंडशिप विद हिम एंड गुड गाय. मतलब ऐसे बंदे होने चाहिए जो पैट्रियोटिज्म है जिनके अंदर, जिनके अंदर खून के अंदर. दोज हु आर, बट एंड दो, इफ समबडी इज डूइंग सम मूवी में एक्शन, उसकी कमाई है यार. कमाई के पीछे क्यों पड़े हो? वो कितना अर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, छोड़ो यार. अपने देश के लिए क्या कर रहे हो वो देखो ना, तुमने क्या किया. तो मैं ये कह रहा हूँ ना, जो अच्छा काम करता है उसको दबा देते हैं. करेक्ट सर. तभी मैं जब वापस आया ना, पहला ट्वीट मैंने किया कि मैंने यार अब मैं, आई हैव राइट टू स्पीक, नाउ आई शुड डिफेंड दिस गाय. एंड आई डिफेंडेड दिस गाय. एंड स्टिल, बट दिल तो टूट ही आता है बंदे का. I will tell you, sir, during Baghi 2, na, during the special screening, I had met Shifuji Shaurya Bhardwaj that time for the first time. I would see his videos on YouTube and such things. And हालांकि आप सही कह रहे हैं, बहुत से फौजी तो गाली भी दे देते हैं. अरे ये क्या क्लेम कर रहा है कि ये ट्रेन कर रहा है उनको इनको उनको. सर मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, उनका वो फौजी नहीं है, कमांडो फौज के पैरा कमांडो नहीं है, हैं? मगर आप ये देखिए कि एज यू सेड intention उनकी motivation level, and when he speaks he is so effective, he actually invokes that emotion into you feel motivated. एंड इज अ आपको नेशनलिस्ट, जोश भर देते हैं ही इज अ वो. नेशनलिस्ट मैन. कहीं भी कोई चीज गलत नहीं बोलता, ना ही किसी धर्म के बारे में, ना कुछ. वो केवल सिटीजन को बोलता है. एंड फील गुड कि अपनी विचारधारा वाला बंदा है. कोई बात नहीं यार, यूनिफॉर्म नहीं पहनी लेकिन दिल से फौजी है वो बंदा. तो मैं तो उसको फौजी Yes, मानता हूँ, दिल से फौजी. दिल से भी तो correct, फौजी होता है इंसान, वो दिल से फौजी है और अच्छा है. correct. आई ऑलवेज विश हिम गुड लक, अच्छा करेगा. और दूसरा जो मूवीज है ना यार, जो तुम बोल रहे हो, मूवीज में एवरीबडी हु अर्निंग मनी एंड ऑल, यार एक आप गॉड की इज्जत करते हो, भगवान की इज्जत करते हो, एक आपकी रेस्ट्रिक्शन होती है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, और आपकी सोच की बात कर रहा हूँ. आप कोई भी मूवी बनाते हो, चाहे वो अडल्ट कंटेंट्स का हो या उसमें आपने लिख दिया इट इज ओनली फॉर यार. वी आर इंडियंस, वी आर नॉट ब्रिटिशर्स, वी आर नॉट अमेरिकन. अभी उतने बड़े नहीं हुए, अभी उतनी मानसिकता हमारी नहीं गई. मेच्योरिटी एंड बिलीफ, एज वेल एज when I am having that position where people are watching, people may get inspired from me. You know, they get motivated or demotivated. We have a responsibility because this is the place which has given you job, which has given you roti and kapda and makan. So you should also thank the nation, because this citizen makes a nation and the nation is feeding you. And your things should be under cover. You should know that, see, look, this is what I am going to do, and this is my restriction. Sorry, I will not earn money. And expose those idiots who are there. True. You have an imagination, but the imagination must have a limitation.
then तो if you go by that imagination तो कुछ भी हो सकता है. Sir, Imagination has some restrictions. On this note, I would like to tell you, आज सुबह को I messaged Shaurya Bharadwaj, Shifuji, Grandmaster Shifuji. So today morning only he messaged. You know what a humble reply he gave me. What a humble reply he has given. If I can show on इसी पे दिखाता हूँ. आज सुबह का ये मैसेज है ये. What a तो I see this के आप intention देखिए ना. आप wait, he's written. What a sweet message. कहाँ गया? I don't know. What a sweet message. He has written, Dear Ali, unfortunately, I could not do much for the nation in my contribution. I think already what he is doing, that's his way of service. So that's his service. Yeah. So that is his service, ना? तो मतलब contribute तो क्या? कुछ भी आप intention तो हाँ क्या ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है. And we must defend. We as a veteran must defend those guys who are working for the nation. And we will stand by him whenever he will be requiring. We are standing for him. Don't worry. Only thing is that people should also use their wise mind. They are wise people. They should also understand कि भाई नुकसान किसका किया, उस पैसे कहीं कमा लिए क्या? Sir, like I have very high regards for Major Gaurav Arya, very high regards. And in 2016 when I heard him speak on TV, I thought, young officer, Major Saab. I had seen Major Generals, बड़ी बड़ी मूंछों के साथ, side cap पहन के, they would give the analysis. है? ठीक है, okay. तो अच्छा, तो I would see कि भाई, and I saw Major Gaurav Arya speaking in 2016. I was like, young officer, Major साहब, भाई मैं भी Major, ये कौन है ये? मैं सुनता हूँ, है? And I saw he was making so much of sense. He was talking so much of sense. उसके बाद सर मेरे गौरव आर्य और मेरी जब दोस्ती जब हुई ना, अरे सर क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं, मतलब मस्त है. He's a good officer. What an orator, what a speaker. He just lost his father, unfortunately, IPS officer. He was a DG BSF, his father, unfortunately. He's a nice man. He keeps on speaking to me and I also keep on. यार मैं तुम्हें मेजर गौरव आर्य का बता रहा हूँ. When I was doing this petition, 1250 Officers Armed Forces Special Power Act की, you know, I received a call from Major Gaurav Arya. He asked me, Amit, हमने बड़ा अच्छा gesture है उसका. He asked me कि अमित, हमने कोर्स ग्रुप ने एक पैसा पूरा इकट्ठा किया था, हम एक ट्रॉफी देना चाह रहे थे अपने एनडीए उसमें आईएमए को, इंडियन मिलिट्री एकेडमी को, एक कोर्स की ट्रॉफी बना. अभी हम सारे कोर्स ने डिसाइड किया वो पैसा हम तुम्हें दे दें बिकॉज तुम अकेले लड़ रहे हो. I was touched with that gesture, but then I replied, sir, don't worry, we both are earning. अच्छा पैसा है petition में. Then we have a very good officer of the court, that time Attorney General मुकुल रोहतगी. बहुत अच्छे लोग हैं ये मुकुल रोहतगी साहब, ऐश्वर्या भाटी, ये लोग जिनके अंदर वो कहते हैं ना पेट्रियटिज्म भरा हुआ है. मैं ब्रीफ करता था तो I felt that not even them, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स फ्रेटर्निटी है ना यार, they too good. बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे एडवोकेट्स हैं. वो लगता है कि कहीं जा रहा हूँ लर्निंग भी. यार जब मैं जाता था, जब मैं रिटायरमेंट होने के बाद में भी गया हूँ विद दिस यूनिफॉर्म, दे हैव एक्सेप्टेड मी लाइक ए ब्रदर एंड वेरी गुड जेस्चर शोन बाय देम. So that means मतलब I have been lucky to be a officer in charge of the legal cell during my time before I went for a promotion, and that was the only thing. Everyone, not a single money has been taken. Can you visit? Aishwarya Bhati, who has now become a SG, देखो blessings भी लगती है फौजियों की. She is doing well. She has become youngest additional Solicitor General lady अपने जोधपुर की पहली, and then she will also rise up to judge. I know that. इतनी humble lady. और उसके बाद साथ में because she was an advocate on record, so any proceeding which has to be filed by her. उसका भी एयरफोर्स ऑफिसर की डॉटर है तो खुली ब्लड था, हम दोनों की एक साथ ही वो मैचिंग. मुकुल रोहतगी सर अगेन अ वेरी गुड हम्बल मैन. मतलब मैंने बहुत लॉयर्स देखे, मैंने बहुत एडवोकेट देखे. To ask you, what is your take on senior experience जब डिफेंस एनालिस्ट आते हैं टीवी पे and who give the analysis, they are experienced Ali, generals. you know the law of the land, you know that. मैं हर बार मेरा जब वो पैगासस वाला एक पत्रकार इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने बहुत ही उससे तरीके से बोला था कि तो मीडिया पैसा बना रहा है, which is wrong. They should understand क्या पूछना क्या नहीं पूछना. दूसरा, जो भी पैनलिस्ट आके बैठता है उस पैनलिस्ट को ना नहीं बोलना चाहिए कुछ चीजों पे कि हम ये करें. Why to discuss? जो करना है आर्मी के ऊपर छोड़ दो यार. There is no requirement of discussing all these strategic analysis. क्यों भाई?
तुमने वो याद है तुम्हें जब उन्नी कृष्ण सर का डेथ हुआ था? आई वॉज कंपनी कमांडर अपना जॉर्डिया में, एंड आई वॉज गिविंग अ कॉल टू वन ऑफ द जी न्यूज वाला बंदा, उसको पता नहीं क्या क्या सुनाया मैंने यू इडियट्स व्हाट यू आर डूइंग, तुम्हें मालूम नहीं है कि बाहर से पूरा बैठ करके कैसे वो कंट्रोल करके बता रहे लोकेशन, एंड यू गॉट so many people killed because of this irresponsible behavior of the media. But True, now sir. since So, मेरे they have उन्नी कृष्ण understood, के फादर को मैंने इंटरव्यू किया था यूट्यूब चैनल पे। आई सेंड दैट लिंक, आप देखिएगा, आपको मैंने भेजा था वो आज यार है। मेरे साथ तो बास्केटबॉल हम खेलते थे 7 बिहार के, और सर अलग टाइप को जॉली, मतलब ये, और एक इफ यू रिमेम्बर पैरा ऑफिसर वन पैरा ऐसा, जो 5 मद्रास से मोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ, ये दो ऑफ कोर्स अच्छे अशोक सीनियर थे। चंद्र, हाँ, उनकी दोनों, मेरी हाँ फ्रेंड भी बन दोनों रही है। बहुत आई ही, आई एम इन टच यार विद हिज ब्रदर, इन फैक्ट आई एम वेरी मच इन टच विद हिज ब्रदर, इन फैक्ट। अच्छा। तो सर दैट वे मतलब लोग बहुत अच्छे, इन लोग को देखता हूँ ना तो वो लगता है यार कि एक ये बंदे हैं जिन्होंने I बिना कुछ कहे। I get what you mean, sir, but like they are people who are giving analysis, sir. Like, अब कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत senior experience. So do you think, as a defense analyst, only a general saab can do an analysis, or a youngster, a major saab नहीं can also देख do? यार, see, the analysis which we see on the TV, ठीक है, you have an experience, that's fine, but you can't rule out that the youngsters is not having experience. You know, a Major Saab can also give, a Colonel Saab can also give, Division Saab can also give, and we must not discuss all these issues in social, because we know the qualified gap and what analysis, even the briefing goes from the junior level, so everybody knows that. Yes, experience, yes, we should respect their experience because they're senior officers. They have so many things they teach. Of course, that of You course, that of have to course. have respect. Only thing is that What my I take meant is, is, वो तो अच्छा करते ही Ali, हैं because of the my experience take on this is, and the knowledge. my take on this is that we should not discuss such things in the social media. There is no requirement of discussing नहीं the नहीं army matters. नहीं What we नहीं are, सर, सीनियर ऑफिसर्स तो करते ही हैं, yeah, उनका तो what you said, उसमें I तो said right. Yes, he can also give. That is fine. You are right on that part. junior officer, sir, a But we junior should avoid. officer, We should not even speak on that part. Huh, sir. you want our analysis on the foreign armies? Then call us. That is Sir, the best thing. Why should I speak about my and army? to be a defense analyst, do you think a civilian who is not served in the army at all can be a good defense analyst? He can. He can. He can. Yes. People are there. He can. Thank you Even a for saying civilian that. can do. I was Yes. expecting a reply from you, so without putting the answer Yeah, in you your mouth, I should. wanted you. You're bang on there, sir. You have यार, क्यों नहीं कर सकता? वो कोई कर सकता है, उसको कहा ही बिल्कुल, कि अगर उसे हर चीज मालूम है तो बिल्कुल. he can be a good analyst. There's no ambiguity on that. Only thing is that I कि was यार expecting this जो answer from बोल you, रहा है sir. वो जब बोल रहा है ना, तो बोलने में लगना भी चाहिए कि यार yes, he is an analyst. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो Sir, बात ही अलग कर रहा है. आपको एक बात He मैं can एक be a बात. good. Sir, I'll tell you one thing, sir. Sir, in my bios, when I was doing bios in Devrali, na, I was failing miserably, okay? So I was expecting probably Foxtrot grading आ जाएगी. If I'm lucky, तो Echo grading आ जाएगी मेरी. हैं? तो I was मतलब keeping तूने my enjoy fingers किया crossed. भाई उसमें. हैं? You enjoy your courses. What do we say I ना, was officer keeping type fingers grading. crossed कि Echo आ जाए मेरे को, उस पर पास हो जाऊं भैया. किसी तरह पास हो जाऊं, RTU ना हो और वापस दोबारा कोर्स करने ना हो. बस मैं Echo आ जाए. जब ग्रेडिंग आई ना सर, तो मेरे को Echo नहीं आई. I got a Charlie grading. And I threw a party. Alpha mess में मैंने पूरी पार्टी करी. I got an officer like grading at least. Charlie grading आई. अब Charlie, अच्छा now, तब हम सर यूनिट में एज अ यंग लेफ्टिनेंट बोलेगा कोई, तो मेजर साहब जो बैटरी कमांडर वो भी नहीं बात सुनेगा. सीओ तो बहुत दूर की बात. ब्रिगेड कमांडर जीओसी तो और दूर की बात. को कमांडर, आर्मी कमांडर, चीफ तो बहुत दूर. Forget about that. अच्छा सर, फिर मैं anyway, तो no one would listen. I had never done any kind of a defense analysis ever in my life, sir. कभी नहीं. फौज में बढ़िया, भी बहुत बढ़िया. नहीं करना भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें. There's no requirement. और फौज के बाद भी अभी भी मैं किसी तरह का डिफेंस एनालिसिस नहीं करता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट रशिया, जैसा आपने कहा, फॉरेन मिलिट्रीज के बारे में, रशिया एंड यूक्रेन, उसके बारे में मैं इतना पढ़ चुका हूँ. सो नाउ मीडिया इटसेल्फ सेज डिफेंस एनालिस्ट और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, जो कि मैं नहीं हूँ. दूर तक नहीं हूँ. दूर तक नहीं हूँ. मैंने कभी करा नहीं, कभी मैं जानता भी नहीं वो काम. ठीक है, बट ठीक है. आई वुड लाइक टू नो, ऐसे अक्सर और डिफेंस एनालिस्ट आते हैं who have not served in the army, but I think they make very good defense analysts as well. Yeah, absolutely. I agree with you. Sir, There is great, no sir. there is no bar on that कि
Since I am a civilian, I can't speak for you. You have full right. If you have exercised, if you have done your homework and everything is clear, and you have an analytical mind, and you have that thought process, and you have also have looked into all that previous wars and the other foreign countries wars, so you can be a very good analyst. People are there. Absolutely, People sir. have written book Absolutely. also. People सर have written book also. सर इट्स बीन सच अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. मैंने आपको पहले ही कह दिया था सर कि हमारी कॉन्वर्सेशन होती है हम 5-15-20 हमारी मिनट वो की करते हैं, यंगस्टर वाली मगर वो हमारी जो एक बात हो घंटे रहा है या वो डेढ़ यंगस्टर, घंटे से ऊपर हो जाती है. एंड मुझे भी सर नहीं लग वक्त रहा कि का मैं सोशल बिल्कुल मीडिया मालूम में नहीं बात पड़ा कर रहा सर. हूँ, ऐसा लग रहा है पर्सनली बैठ के बात कर रहा हूँ तुमसे. तो वो आई बीच बीच दैट्स में अ ना ह्यूज थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट सर. आई अपोलोजाइज टू द व्यूअर्स अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया हो, नहीं नहीं बिकॉज नहीं, आपने बिल्कुल ये सब कुछ बोला, बिल्कुल दुरुस्त बोला सर, बिल्कुल सही बोला आपने. सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू. तो मेरा कोर्समेट है एक संकल्प शोभित. हमारे फौजी ग्रुप में ना आप देखा एवरी ऑफिसर हैज टू वेरीफाई नाउ दैट हम ये हैं. सो संकल्प ने लिखा भाई मेजर मोहम्मद अली शाह. ऐसे ही मजाक करते रहते हैं हम आपस में, टांग खींचते हैं कोर्स ग्रुप में. तो वो टांग खींचा था भाई कि यू वेरीफाई, यू सेंड योर लेटेस्ट यूट्यूब लिंक एंड यू. तो आई सेंड हिम यूट्यूब. कल मैंने एक वीडियो निकाला यूट्यूब पे, तो आई सेंड हिम दैट लिंक. मैं ये ले भाई, तो कहता है ब्लडी फ्रॉड, ये तो कल का वीडियो है, पुराना वीडियो है, अभी का भेज नया वाला. अच्छा सर इत्तेफाकन क्या हुआ, हमारी गुफ्तगू हो रही थी अभी एंड वेरी स्वीट ऑफ यू आल्सो सर. तो मैंने फट से ओके अपना ये लिंक डाला कोर्स ग्रुप में. सर संकल्प सुन रहा होगा, ओके. अगर नहीं सुन रहा होगा लाइव तो संकल्प को मैं ये लिंक भेजूंगा ग्रुप में. सर थैंक यू वेरी यार मच, वेरी स्वीट कोर्समेट ऑफ जो है यू, ना, काइंड ऑफ. एक चीज याद रखना, सर कोर्समेट और दोस्त तुम्हें हमेशा सही रखेंगे. मैं हमेशा अपनी गालियां लेता हूँ कोर्समेट से, मैं चाहे जहां पहुंच जाऊं. दे आर द वन हु विल ब्रिंग यू डाउन टू द मदर अर्थ एंड से एंड शो योर पोजीशन. ओ दैट्स अ गुड थिंग. यू हैव टू टेक इट स्पोर्टिंगली. और मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है कोर्समेट से गाली सुनने में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. यार ठीक है, वट एवर आई एम इज फाइन, बट फॉर माई कोर्समेट आई एम कोर्समेट इज अ नॉर्मल अमित. तो नवाब जो बोलते हैं मुझे ये लोग लखनऊ की वजह से. तो दैट्स ट्रू व्हाट. सर, ट्रू. True, sir. Sir, thank you so much for your time. Any last message for our viewers, for the youth of our country, which you would like to give, sir, before we part, sir? It was a pleasure. It was a pleasure, and so nice. This thing chatting with you and just YouTube also is a very good idea of yours. And even you have given me opportunity to bring out my points also. The message which I wish to convey to my all citizens and to the youth is same. Brothers, sisters, your 100 meters before you sleep, just check that there is no injustice. Nobody is sleeping hungry, and there should be nothing which is unlawful or something kind of things which are happening. You are responsible for this nation, so as the soldiers of this country. And फौजी बनने के लिए, फौजी के लिए कोई जरूरी नहीं है. आपके टास्क जो है ये बेसिक्स आपके अंदर होना बहुत जरूरी है. तो अपना 100 मीटर का दायरा ढंग से चेक करो सोने से पहले, और इस चीज को अपने दिमाग में डालो. बस यही मेरा मैसेज है. और आप सभी को मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. डू वेल एंड गॉड ब्लेस दिस नेशन. गॉड ब्लेस एंड जय हिंद, जय भारत. और इसी के साथ आई टेक लीव फ्रॉम दी Ali as well as all the viewers who are watching us. Thank you so much, Ali, for inviting me. Thank you so much. Sir, It was a thank you pleasure. so much for Jai spending Hind. time, sir. Jai Hind, sir. Jai Thank Hind. you. Jai Hind. Ending the broadcast, sir. Just a minute.